Okay, so let me. Can you hear me? Can you hear me? तो मैंने एक जगह यूज ये किया था, चलो हम उसको करेंगे। जरा कैमरा ऑन करो सभी। कैमरा ऑन। तो हमने बेसिकली उसका कन्वर्स दिखा दिया जो हमने इससे पहले कहा था पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। यानी हमने एक तरह से ये अब प्रूव हो गया, एक तरह से ये प्रूव हो गया। तो रिमार्क में हमने एक्चुअली वन नाउ वी हैव शोन दैट a normal linear, या कैसे कहें, a norm, a normal space, normal linear space, ऐसे करता हूँ, is an inner product space if and only if the norm satisfies, क्योंकि पहला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, दूसरा हमने कर दिया satisfies the parallelogram law। तुमने घर पे उसको ट्राई किया जो मैंने कहा था, वो parallelogram law for geometry, you know, ordinary geometry, parallelogram law। मैंने एक जगह ये किया, मैंने एक जगह इसमें ऐसा किया कि लिमिट n approaches infinity, ऐसे मैंने किया था r n x y, मैंने माना था बराबर लिमिट n approaches infinity, right, r n x y, ये हमने एक्चुअली किया था। अब इसको मैंने बेसिकली एक छोटा सा रिजल्ट करते हैं कि इनर प्रोडक्ट इज जॉइंटली कंटीन्यूअस। चलो मैं यहाँ ऐसे कर सकता हूँ, थ्योरम, छोटा सा, इसको थ्योरम भी नहीं कह सकते, छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। इनर प्रोडक्ट इज जॉइंटली कंटीन्यूअस। जॉइंटली कंटीन्यूअस का मतलब if, that is, if xn converges to x, in norm, because inner product would give rise to a norm, and yn converges to y in norm, as is the case with normal linear space, then xn yn जो कि scalars है would converge, this sequence of scalars would converge to xy। अब इसके लिए हम Cauchy-Shiva's inequality करेंगे, that is what connects norm with the inner product। I mean जो norm inner product से मिलता है उसका जो connection है inner product के साथ, that's Cauchy-Shiva's inequality। So if I take the modulus of xn yn minus xy, I can write it as mod of xn yn minus xny plus xny minus xy. I added and subtracted the same thing, but that can be written as by the properties of the inner product। क्योंकि ये सेम है यहाँ पे, दूसरे को मैं ऐड कर सकता हूँ। This is can be written as xn comma yn minus y, और इसको मैं लिख सकता हूँ xn minus x comma y by the whatever third property of the inner product।
but this is less than equal to, because this is the modulus of these things, xn on yn minus y plus xn minus x comma y. Now by Cauchy-Shiva inequality, this is less than equal to norm of xn, norm of yn minus y plus norm of xn minus x into norm of y. Now I have applied by Cauchy-Shiva's inequality. Okay, but this thing converges to zero, है ना? मैं कह रहा हूँ xn minus xn converges to x and yn converges to y. That means this approaches zero because this is becoming zero and this is also becoming zero. So अगर ये zero है और ये non-negative है, that means this must be becoming zero as n approaches infinity. So which implies, of course, xn yn must converge to xy. अब वही हमारा वहां पे था कि क्योंकि हमारे पास एक नॉर्म है अब, तो I had got something like, what was that? I got Rnx. Actually, I was a situation Rn goes to alpha, which means Rnx must go to alpha x because scalar multiplication is continuous. तो अगर ऐसा है, then what? Rnx minus alpha x goes to zero as x approaches infinity. That means, how should I write? हाँ कर सकते हैं. Rnx minus alpha x जो अगर zero को जाता है, so that means this thing must go to 0y, that was equal to 0 for all y belonging to whatever जो भी है, which means that Rnx comma y minus alpha xy goes to 0 for all y, which would imply that limit n approaches infinity, Rnxy should be equal to alpha xy. But alpha तो है limit n approaches infinity, Rnx comma y. मतलब वही ना जो मैंने लिमिट बाहर था, that follows from this continuity of the net product and actually continuity of the scalar multiplication. So we have finished this thing. थोड़ा लंबा चौड़ा theorem था. We did this thing. Now we want to come to, तुम्हें पता है मैंने कहा था तुम्हें projection theorem के बारे में. Of course, if x is just a vector space, then and y is a subspace, then you can break it into two. X can be written as y plus z. ठीक है ना? And you know, you can define a projection from x to y that is linear and idempotent onto, and y would be then range of P and z would be kernel of P. फिर हमने एक और भी किया था, लेकिन यहाँ सिर्फ linearity है क्योंकि यहाँ continuity का तो कोई बात ही नहीं है because it's just a vector space. Now if x is a normal linear space and y is a finite dimensional subspace, then it is complemented, right? So then you can write x as y plus z, because you know again by the same thing, and there is this a projection from x to whatever, x to y. वो हम कर चुके हैं prove. Of course फिर तुम्हें लेना है. Then you can find this z. वो हमने नहीं उसमें दिखाया कि ये z हमें कहाँ से मिलेगा, लेकिन we can find this z. वो एक होम असाइनमेंट हो सकती है. तो find this z if y is finite dimensional subspace.
फिर हमने एक और किया था using of course this Banach theorem. Now if X is not just a normal linear space, a Banach space, and M मैंने लिखा था वहां पे कि Y लिखा था, Y मतलब है it's a closed subspace, then also I can break it into two. Then you can write this as M direct sum N, where again M is the जो ना हम कर रहे थे बात, ये ब्रेक करना into simpler spaces is a मतलब उसे कांस्टेंट थीम ये हम कब कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ जो प्रोजेक्शन होगी वो लीनियर है, ऑन टू हैंड आइडेंटिपोटेड है, आइडेंट ये तो होना ही चाहिए, P कंपोजिशन P इज इक्वल टू P, और यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर कुछ है, इट इज जस्ट अ सबस्पेस, है ना, इट्स अ फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस, राइट, और यहाँ पे और X इज जस्ट अ नॉर्मल लीनियर स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंडीशन है X हैज टू बी अ Banach स्पेस एंड M इज अ क्लोज्ड सबस्पेस, देन वी कैन डू इट, राइट। तो यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशन की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लोज्ड की रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन X पे रेस्ट्रिक्शन है कि इट हैज टू बी कंप्लीट, यहाँ पे वो कंप्लीटनेस नहीं है, लेकिन यहाँ वो है कैन बी फाइनाइट डायमेंशन। सो दोज आर द डिफरेंट सिनेरियोज। अब हम आते हैं हिल्बर्ट स्पेस में, इससे भी बेटर सिचुएशन है, एक्चुअली बेस्ट सिचुएशन। हिल्बर्ट स्पेस में हम दिखाएंगे कि ये हमेशा पॉसिबल होता है। हिल्बर्ट स्पेस का मतलब एक कंप्लीट इनर, यानी इट्स अ Banach स्पेस, लेकिन इसका नॉर्म जो है वो स्पेशल नॉर्म है। हिल्बर्ट स्पेस इज इंडीड अ Banach स्पेस। सो इसमें Banach स्पेस वाला तो जो जो चीज Banach स्पेस पे अप्लाई होगी वो हिल्बर्ट स्पेस पे भी अप्लाई होगी, बिकॉज एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज अ Banach स्पेस। बट देयर इज मोर इज जो हम आगे करेंगे, बिकॉज जो नॉर्म है हिल्बर्ट स्पेस का, that's a special norm that has got a relationship with the inner product. It is given by this formula. ओके, वही उसी की तरफ हम जाएंगे। मुझे लगता है वो कल करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम करेंगे, we have to talk about what's a convex set. So a convex subset of a okay, let X और H जो भी तुम नाम देना चाहो, X भी वेक्टर स्पेस, इसके लिए नॉर्म या इनर प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है। It could be a vector or call it linear space over some field Q or over some field K. Let C be a subset of X such that if X comma Y belongs to C, then alpha times X plus 1 minus alpha times Y also belongs to C for all alpha lying between 0 and 1. तो अगर अल्फा है रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो इस टाइप के सभी वेक्टर्स जो बनेंगे वो भी सी में होंगे जब भी एक्स वाई सी में होगा। अगर ऐसा होगा देन सी इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स सेट। एक्चुअली हाँ बिल्कुल। अब जो R3 और R3 में अगर मैं लूं R2 एंड R3, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है R2 और R3 में अगर मैं इसको, बिकॉज दे आर वेक्टर स्पेसेस ओवर R, इसका मतलब ये बनेगा R2 में कि अगर x एंड y कोई पॉइंट है, राइट, then any point that lies on the line segment joining these two points, any point here z is of the form alpha x plus 1 minus alpha times y,
where alpha belongs to the open interval 0 1. तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इस डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्सिटी को इनटू R2 और R3, तो ये भी तुम एक होम असाइनमेंट कर सकते हो. यूज सेक्शन फॉर्मूला. अगर तुम सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे तुम देखोगे यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा इट वुड डिवाइड इट इन द रेशियो K1, फिर लगा दो कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो हमेशा इस टाइप के होंगे, राइट, where alpha belongs to 0 1. So it's a positive number that's less than 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्सिटी का मतलब R2 या R3 में ये है कि कोई सेट कॉन्वेक्स है कि अगर उसमें 2 पॉइंट होंगे तो उनके जुड़ने वाला लाइन सेगमेंट भी उसी में होगा. सो R2 R3 में इसका मतलब होगा ये सेट कॉन्वेक्स है. ऐसे ही मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया क्योंकि अगर उसमें 2 पॉइंट होंगे तो उनके जुड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट पे जो सारे के सारे पॉइंट्स है यहाँ इस लाइन सेगमेंट पे, वो सारे के सारे इसमें है. और अगर ये सेट है ये कॉन्वेक्स नहीं है, जैसे क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स तो ये है लेकिन इनके जुड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इस सेट के अंदर नहीं है. सो दिस इज नॉट कॉन्वेक्स. तो R2 और R3 में इसको हम ऐसे सोच सकते हैं. लेकिन इन जनरल द डेफिनेशन फॉर एनी वेक्टर स्पेस इज दिस कि अगर XY उसमें है 2 डिफरेंट एलिमेंट्स तो हम एम्प्टी सेट को भी कॉन्वेक्स मानते हैं, दैट्स बाय डिफॉल्ट. एक सिंगलटन सेट को भी हम मान सकते हैं कॉन्वेक्स, दैट्स बाय वैक्यूलसिटी बिकॉज़ द डेफिनेशन डजंट अप्लाई. अब इस कॉन्वेक्स सेट ऑफ कोर्स this would apply to any normal space also, because normal linear space is also a vector space. तो उसमें भी ये convex set की definition. This also applies to Hilbert space or inner product space, क्योंकि वो भी तो एक vector space है. मतलब starting में तो उनको vector space होना है और उसमें कुछ additional properties है, एक additional function है, whether it's a norm or an inner product. So now पता नहीं ये करेंगे हम कि नहीं, चलो करते हैं. So we want to show that theorem. A closed convex subset, a subset that is closed means it contains all its limit points. A closed convex subset C of a Hilbert space H contains a unique vector of smallest norm. ये तुम्हें हमेशा सोचना चाहिए कि कोई सेट अगर है, it doesn't mean it contains its smallest number. जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं इंटरवल है 1 2, does it contain its smallest member? It does. It doesn't. तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ. मतलब स्मॉलेस्ट से मेरा मतलब है जिसका मॉडुलस सबसे छोटा है. मैंने गलत कहा फिर से, तो इट इज कॉन्वेक्स. तो मेरे कहने का मतलब है, मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ कि कोई सेट अपना जो सबसे छोटा लेंथ का वेक्टर होगा उसको कंटेन करे, ये जरूरी नहीं है. तो व्हाट कैन आई गिव एन एग्जांपल. एक एग्जांपल मुझे खड़ी करनी होगी, तो वो क्या हो सकती है. जिसकी लेंथ सबसे छोटी हो, तो हमें वो चाहिए जिसकी लेंथ सबसे छोटी हो. चलो पहले मैं ये करेंगे, तो देन वी विल गो टू दैट, क्योंकि ये क्या करें ना, इसमें हमें एक लिमिटेशन है, ये 40 मिनट्स की ये क्लास तो है नहीं. तो पहले हम ये करेंगे, हम फिर उसकी तरफ आएंगे. सो लेट्स प्रूव दिस फर्स्ट.
So you have a vector space. देखो R2 R3 में तो example देना जरा मुश्किल है. That a set does not contain the vector of smallest norm. हमें कुछ और करना पड़ेगा. But nevertheless, I will check it. अब हम कह रहे हैं कि a closed convex subset is like this. ठीक है ना? So let C. Now पहले लिखते हैं since C is convex, then it contains 1 by 2 into x plus 1 by 2 into y whenever x, y belong to C. That's by convexity. हमने कहा ना अल्फा को हमें लेना है 1 by 2 which lies between 0 and 1, and clearly 1 by 2 times x plus 1 by 1 minus 1 by 2 times y belongs to C. That means 1 by 2 times x plus 1 by 2 times y belongs to C. Now let D be the smallest length of vectors. Let D be the infimum of all x's, or the lengths of the x's, where x belongs to C. Hence, because this is a subset of real numbers, these norms, so infimum जो है वो एक limit point होगा. Hence, अगर ये limit point है, then we can find a sequence of a subsequence of real numbers. Therefore, a sequence of numbers that converges to D. Hence, there exists a sequence of xn contained in C such that norm of xn converges to D as n approaches infinity. Now also, since these xn's are contained in C for all n, I have xn plus xm by 2 belongs to C for all n m belonging to the set of natural numbers. कोई भी दो का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो भी C में ही होगा because of convexity. अब चूंकि सबकी लेंथ जो है वो D से बड़ी होगी, जो भी C में है, क्योंकि D है उन लेंथ्स का इनफिनिट. So that would mean that xn plus xm divided by 2 must be greater than equal to D for all n m belonging to the set of natural numbers, which means using the properties of the norm, दो चूंकि नॉन नेगेटिव नंबर है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं. और मैं क्या लिख रहा हूँ? belonging to the set of natural numbers. Now by parallelogram law, चूंकि ये तो Hilbert space है, therefore inner product space है. Parallelogram law कहता है norm of xn minus xn the square can be written as twice norm of xn square plus norm of xm square minus norm of xn plus minus यहाँ पे आएगा, वो गलत फिर से. Okay, xm square, not just the definition. Now we know that this is greater than equal to 2D. So this is therefore minus is less. So this is less than equal to twice norm of xn square plus square यहाँ पे twice norm of xm square minus norm of minus, I think this should be 4D square. उसकी वजह है मैं किया है xn plus xm जो है वो है greater than equal to 2D. इसका मतलब this is greater than equal to 4D square. That means minus is less than equal to minus 4D square. वही मैंने यूज किया.
So as nm approach infinity, as n and m approach infinity, चलो कॉमा रखते हैं, तो ये तो है, इसका जो लिमिट है वो d है, इसका भी लिमिट d है. This converges to twice t square plus twice t square minus 4d square, है ना? That's equal to 0 as nm approach infinity, which implies that xn is a Cauchy sequence in C, which is contained in H. And since H is a Hilbert space, it's complete. It's complete implies that xn converges to some x belonging to H, but C is closed by our assumption. C is convex and closed. C is closed in H, so it means it must contain all its limit points. So therefore, x belongs to C. X belongs to C, and it is the limit. So and norm of x जो है, it is equal to limit n approaches infinity xn. Right. Actually ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मतलब मैं थोड़ा रूल्स को फॉलो करूंगा. नॉर्म ऑफ x जो है, xn converges to x, तो ठीक है, हम बिल्कुल सही है. मुझे लगा कुछ मैंने गड़बड़ कर दी, बिल्कुल सही रूल्स हमने फॉलो किए. अब चूंकि नॉर्म कंटिन्यूअस है, दिस वुड बी लिमिट एज n becomes very very large xn, right, that's equal to d, क्योंकि इसकी लिमिट ही है नंबर्स की. So यानी एक वेक्टर हमें मिला, we found x belonging to C that it has the smallest norm. This norm is the infimum of all the vectors inside C. The question is the uniqueness. So therefore C contains a vector of smallest norm. Now to show that x is unique, that's again we can use to see that x is unique. X is unique. Let x prime belong to C such that norm of x prime is also equal to D. Now since C is convex, then x prime belongs to C would imply that x by 2 plus x prime by 2 belongs to C. C is convex, and norm of x plus x prime divided by 2 का square is equal to twice, तो लिख सकते हैं ऐसे, चलो x by 2 plus x prime by 2 का square using parallelogram law, this is equal to twice norm of x by 2 का square plus norm of x prime by 2 का square minus norm of x minus x dash by 2 का square. So which is less than, क्योंकि हम एक quantities को क्या बोलते हैं ना, subtract कर रहे हैं नॉन नेगेटिव, norm of क्या आना चाहिए, x square by 2, that's obvious क्योंकि 4 यहाँ से बाहर निकला, 2 इधर है, plus norm of x prime by 2 का square. So which is the same thing as, it is d square by 2, d square by 2, so it is d square. Now which contradicts the definition, that is हमें मिलेगा x plus x dash by 2 is less than d. ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये C के अंदर है और इसका नॉर्म जो है वो d से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि d है C नॉर्म सबसे छोटे वाले वेक्टर का, which is a contradiction.
contradiction. So therefore x must be equal to, yeah, therefore x is unique. Okay, so let me stop it here. इंशाल्लाह कल हम फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे. Let us end. कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कहीं पे? नहीं, मुझे लगता है सर कहीं कहीं पे समझ नहीं आता, कहीं कहीं पे. हाँ, वहां रोका करो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, वरना फायदा क्या है क्लास का. तो वहां रोका करो ना, इसीलिए क्लास होती है ना. तो मुझे रोको सर, यहाँ समझ नहीं आया. इवन अगर आज तुम्हें लगता है, वो तो मुझे कल पूछो कि हमें समझ नहीं आया था कल कोई चीज. जी जी सर. वो पूछना होता है ना, बिना पूछे कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें समझ नहीं आया. हाँ, क्लास में थोड़ा बहुत क्लू मिल जाता है शक्ल देख के. यहाँ तो वो भी नहीं है ना, तो शक्ल से पता चल जाता है इसको समझ नहीं आया, ये कुछ सोच रहा है. यहाँ तो मैं शक्ल भी नहीं देख सकता, क्योंकि मैं बोर्ड जब लिख रहा हूँ तो तब तो बिल्कुल नहीं देख सकता. तो इसलिए जरूरी है कि तुम पूछो, वरना मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें समझ नहीं आया, है ना. तो जब भी कुछ समझ ना आए किसी भी जगह, रोको, बोलो सर 1 मिनट, यहाँ ये बात समझ नहीं आई. कोई दिक्कत नहीं, क्लास का यही मकसद है. वरना पढ़ तो तुम बुक से भी सकते हो ना, फिर टीचर का क्या मतलब है ना. टीचर का यही मतलब है तुम मुझसे पूछोगे, बुक से मत पूछ सकते हो ना कि यहाँ मुझे समझ नहीं आया. ये टीचर से पूछ सकते हो यहाँ यहाँ क्या है ना. जी सर, अब हमारा पेपर है तो ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे. आई थिंक 5 करेंगे हम, 2-2 मार्क्स के 10. ठीक है, तो पहला यूनिट तुम अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है. ठीक सर. ओके. हाँ सर. मंडे को है ना शायद. ओके. हाँ सर, मंडे को है. चलो मंडे को एग्जाम करते हैं.